नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। ये एक वीडियो है जो बहुत सारे लोगों ने बहुत देर से मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं बनाऊं, सो आई थॉट आई विल डू इट टुनाइट एंड आई एम गोना शेयर इट विद यू ऑल। जहां पर बहुत सारा क्वेश्चंस और बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं अराउंड व्हाट्सएप privacy policy and whether we should move out of WhatsApp, whether we should delete WhatsApp, whether we should move to some other platform like Signal या Telegram. So इस session में I'm gonna get a little bit of insight for you guys around the privacy policy. At the same time, what is it all about? What is the fuss? And why are people like Elon Musk and many more, social media पे लोग बैन करने के लिए बात कर रहे हैं, and they're saying we should just move to Signal. So we will give it a shot and try to see, why people are saying what they are saying. So सबसे पहले तो basic information मैं आपको बता देता हूँ. January 4th को Facebook, which is the parent company of WhatsApp, they came up with this new privacy policy. तो privacy policy के बारे में इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता privacy policy के लिए. Every single social media application, आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं social media पे, it has to have the privacy policy signed by you. आपने कभी भी कोई भी ऐप डाउनलोड की होगी, आप एक एक्सेप्टेंस, एक एक्नॉलेजमेंट करते हैं एक पॉलिसी को जो सबसे पहले स्क्रीन पे आती है. उसके अंदर privacy is a very very important clause, because आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उस ऐप के अंदर automatically there is a lot of information that is being either shared with the parent company or it's stored on their servers. या ये भी हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करके they might be passing on to some vendors, some businesses and all that stuff. So privacy policy उस लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाती है कि ये privacy policy को कैप्चर करना, अप्रूवल लेना, क्योंकि आप किसी के भी डिवाइस पे, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन किसी भी डिवाइस पे यूज़ हो रही हो, उस एप्लीकेशन से आप उन कस्टमर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है. सो ऑल दैट इज़ डेफिनेटली कैप्चर्ड इन द privacy policy as well. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने इस टाइम पे स्क्रीन पे जो रखा हुआ है, दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन privacy policy, और ये वो अपडेट है जो कि व्हाट्सएप ने अभी रिलीज़ किया है. एंड the initial date, which was they were forcing everyone to accept this privacy policy, was February 8th, which has been pushed now to May 15th. So आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारा बैकलैश मिला है for all these policy changes. And why not? I mean, of course there will be people who will not like it. There will be people who will be impacted, more impacted than most of us. तो हम उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे. बट इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड सेट ऑफ privacy policy, जिसके अंदर ये लोग बात करते हैं what kind of information is collected, and why was it collected, why would it be collected, and how it will be shared, what kind of information you provide, of course your account information. अभी हम बात अगर सीधा डायरेक्टली इफ यू जंप टू द टॉपिक, व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप इज़ एन एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप लोगों से चैट करते हैं, वन ऑन वन लेवल पे बात कर सकते हैं, या ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर आई थिंक मैक्सिमम 6 लोग ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डू वॉइस कॉलिंग, यू कैन ऑल्सो डू वीडियो कॉलिंग. व्हाट्सएप की अब तक की जो पॉलिसी रही है वो यही रही है कि इट इज़ ऑल इनक्रिप्टेड, ऑल द डेटा इज़ इनक्रिप्टेड. सो इनक्रिप्शन से मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल मैं अपने एक फ्रेंड को मैसेज भेज रहा हूँ, तो मैंने अगर लिखा हाय अरुण हाउ आर यू, तो मेरे फ्रेंड को भी हाय अरुण हाउ आर यू मिलेगा, बट डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलता. सो ये इन्फॉर्मेशन जाती है एक सर्वर पे, और सर्वर पे इनक्रिप्ट हो जाती है. तो व्हेन आई सेंड इट, इट गेट्स इनक्रिप्टेड टू अ लैंग्वेज व्हिच नोबडी कैन अंडरस्टैंड. सो अगर सर्वर को कोई हैक कर लेता है, तो उस इंफॉर्मेशन को, उस कोड को अगर वो
रिट्रीव भी कर लेता है, तो उससे उसको मतलब नहीं समझ आएगा। फॉर देम इट विल बी वेरी, कहते हैं ना, रॉ जार्गन लैंग्वेज होगी जो कोई नहीं समझ सकता। तो so the process is basically it goes through an encryption and decryption process. पहले encrypt होता है सर्वर पे, और सर्वर से फिर जब वो जाता है to the friend, then it gets decrypted. So बीच में any of these companies, और especially अगर मैं Facebook की बात करूं या WhatsApp के सर्वर की बात करूं, nobody can understand, nobody can retrieve that information. So I think this is really important because a lot of information gets stored initially. आपका phone number, आपकी basic information, like what kind of name you've given to the profile. If it's a business account, then what kind of business it is, what are the different products that you're selling. तो आप वो सब कुछ एक catalog बनाते हैं business account में, and you kind of keep all that information, and all that information is definitely stored by WhatsApp, basically by Facebook. Now all your messages, चाहे वो delivered हो चाहे undelivered हो, तो delivered में भी ये होता है, sometimes there are two active people. मैंने अगर भेजा, मेरा friend active है, तो we'll see it real time. कुछ लोग होते हैं, they are pretty busy, messages नहीं पढ़ते, so there is a standard process like 30 days के लिए वो message वैसे ही पड़ा रहता है, उसके बाद you can still retrieve it, but it's we keep it encrypted from a server's 30 days as we try to deliver it. If it is not delivered after 30 days, we delete it. So deliver होने के बहुत सारे reasons हो सकते हैं, network का ना होना, phone से app delete कर देना, and many more reasons. So 30 days के लिए WhatsApp की current policy है. And then you could also forward some media में आता है, videos होते हैं, then you have pictures, then you have memes, then you have attachments, PDF files, word document, आप किसी भी तरह की कर दें, तो वो सारी चीज़ों के लिए WhatsApp end-to-end encryption ज़रूर देती है. तो anything you share is definitely encrypted. So all your connections, the status information, so जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आप status लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं, you are on a vacation, you're out, you're on a break, you can't be reached, or call me instead of WhatsApp message. So all that status information definitely is something which gets stored. The new thing that happened with WhatsApp was WhatsApp Pay. I think one of the reasons why we have these policies being supplemented, or इनके अंदर additions हो रही हैं, they are happening only for a very simple reason that just like what Google has, like Google Pay, WhatsApp also came up with WhatsApp Pay or Facebook Pay, where now you can transfer money between yourself and your friend or your family member. तो आई थिंक व्हाट्सएप का ये एक बहुत बड़ा एक एजेंडा है to compete with Google. So Google की जैसी एक एप्लीकेशन होती है, Google is a suite of applications. Same thing, I think Facebook उनको compete करना चाहता है, और he wants, Facebook also wants to kind of expand their domain so that they can provide all their ads to different platforms which they have integrated, or they're trying to integrate. WhatsApp भी जब इन्होंने acquire किया था, there were definitely plans to, just like Instagram, this is also like an application which has to be integrated with Facebook, so that there is kind of cross pollination. Cross pollination मतलब जो आप फेसबुक पे देख पा रहे हैं, जो आपने फेसबुक पे अगर कुछ सर्च किया है, तो वही इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे, अगर व्हाट्सएप पे आप किसी से चैट कर रहे हैं कि व्हाट, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू कार, सो से फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग फॉर अ टेस्ला, और आप अपने फ्रेंड को मैसेज भेजते हैं कि टेस्ला का कौन सा मॉडल अच्छा है, व्हाट आर द फीचर्स एंड ऑल दैट स्टफ. नाउ द वे all these integrations have happened, वो आपने वहां चैट की है, नेक्स्ट डे यू गो टू फेसबुक, और द सेम डे इन द सेम मे बी आवर, आपको फेसबुक पे एड्स दिखनी शुरू हो जाएंगी टेस्ला मॉडल्स के बारे में, एंड ऐसी ही और चीज़ों के बारे में. आप व्हाट्सएप में जो बात करें, आप इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट लाइक करें या शेयर करें, उनकी इंफॉर्मेशन फेसबुक से. सो इट्स काइंड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में ज़्यादा है.
एंड ऑफ कोर्स एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो कस्टमर केयर से हो, अगर आप किसी कस्टमर सपोर्ट से चैट कर रहे हैं, जैसे कि आजकल व्हाट्सएप पे चैट करती है सपोर्ट, and you're not happy, then that kind of information also gets passed on, and accordingly there are certain actions that can be taken. And then there are a couple of things that are automatically taken. जैसे कि हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, आई थिंक इसमें एक चेंज है, जो पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं फिर व्हाट्सएप की, जिसके अंदर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कैप्चर करते थे, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ फोन यू आर यूजिंग। आपने देखा होगा ट्विटर पे भी, कोई भी अगर यूज करता है तो उसके नीचे, unless you change the setting, it will automatically capture your device information. तो आपने देखा होगा लोगों के आईफोन आ जाता है या एंड्रॉयड आ जाता है, तो ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी कैप्चर्ड, ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो रहा है। एंड देन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं हिंदी में करना, especially around the north part of India. And then there are people down south who want to use their own native language. So once you select that in your phone or in your app, automatically the kind of ads, the kind of products that you start getting on all the platforms uh, defaults to that language. तो ये सारी चीजें already information capture होती थी। uh, as a layman user, you used to also give them, of course, the number, the language, the location इसलिए भी जरूरी होता था capture करना। Again, all these are options that you can disable. Of course, phone number आपको देना पड़ेगा because you have to register. Location is something which you can disable if you don't want your location to be, it's very similar to what Google search does, right? I mean, Google search के लिए भी by default आप कुछ भी search करते हैं वो चीज information save रहती है, बट आप गूगल की सेटिंग में जाके उसको डिसेबल कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट गूगल टू स्टोर योर इन्फॉर्मेशन। सेम थिंग यहाँ पर है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, फेसबुक हो, यू कैन ऑलवेज डिसेबल कि मुझे अपनी लोकेशन नहीं बतानी, एंड फेसबुक और व्हाट्सएप शुड नॉट स्टोर माई इंफॉर्मेशन। सो देर इज अ सेटिंग अवेलेबल, बट येस, बाय डिफॉल्ट everything is enabled so that all this information can be fed to Facebook. उसके अलावा, very little kind of changes. Yes, the bigger changes or the more important changes that are coming up is uh, additional information थोड़ी capture होगी. For example, battery life. What kind of a battery life you have, what kind of device ID. IMI EID पहले भी कैप्चर होता था, डिवाइस आईडी, बट अब वो जरूर कैप्चर होगा बिकॉज नाउ दे विल आल्सो फिगर आउट, जैसे कि कहते हैं, व्हाट्स योर काइंड ऑफ स्टेटस, हाउ ओल्ड फोन यू आर यूजिंग। कुछ लोग हैं, जैसे आज की डेट में भी मैं देखता हूँ आईफोन 6 या 7 पे है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आईफोन 12 प्रो समथिंग आ चुका है। तो वो लोग देखेंगे, थ्रू दिस इंफॉर्मेशन दैट दिस पर्सन इज स्टिल ऑन अ ओल्ड फोन, they will try to upsell, they will try to provide you those uh, features, जहाँ मतलब products जिनकी upselling करेंगे वो लोग, और दिखाएंगे कि what, since you are an iPhone user or an Apple owner, let's show them the new phones available after a period of time. Same thing for Android. अगर आप Android के एक पुराने version पे है, they will show you the new products in the market. उसके अलावा बहुत सारे लोग ये डर रहे हैं कि encryption का क्या। Guys, encryption is not going anywhere. Encryption is going to be here. Encryption is going to be on all the applications actually. So चाहे वो WhatsApp है, चाहे वो Signal है, और आजकल Signal का बहुत ज़्यादा नाम शुरू हुआ है, Signal and Telegram। तो मैं उससे भी थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा, बट बिफोर आई डू द कंपैरिजन, एक लास्ट चीज़, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन विद व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, ये पे एप्लीकेशन वही एप्लीकेशन है जैसे गूगल पे की एप्लीकेशन दैट यू कैन ट्रांसफर मनी। दे रियली वांट, फेसबुक रियली वांट्स पीपल to use their application to transfer money. There are different other apps, PayPal hai, there is Google Pay, and then there are other, Western Union, all that, उनके बारे में ये information नहीं store कर सकते because those are third party applications. But if you are using Facebook Pay or WhatsApp Pay, then they can ask you, and they will ask you in the privacy policy to store that information. So they also want to see
what kind of transactions. Of course, they will not be able to get those specific details, but they will still be able to know how much money is being transferred from your phone, your device, your you to the other person. इसके बहुत सारे implications हो सकते हैं, especially ये business accounts में होते हैं, जहाँ पर tax evasion and tax से related बहुत सारी चीजें होती हैं. If you're making a certain amount of money, taxes should be paid, in a timely manner, in the amount that is, that should be there. Uh, so ऐसी चीजों को capture करने के लिए privacy policy always needs to be updated. So ये तो था on a high level, what are those privacy policies, and location information, cookies, and all that stuff. And then of course the third party applications कई बार integrated होती हैं आपकी application. So I don't want to kind of go into the third party applications, but आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि ये चीजें use कैसे होती हैं. You get a lot of existing services. Facebook के बहुत सारे products हैं. They also have started a kind of a suite of applications. तो आप चाहे Instagram पे हैं, चाहे आप WhatsApp पे हैं, चाहे Facebook पे हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी और applications होती हैं जहाँ पर they want to get your feedback. So they really want to know how you are using their services, so they can improve their services. Safety, security, of course, is your information safe? If you're sharing something with another person, is that safe, or is that encrypted? कई बार ऐसा होता है कि there are certain legal aspects, legal issues. At that point of time, even a subpoena in US या एक warrant के हिसाब से India में, people can generate some information. आपने देखा ही होगा आज की डेट में, जैसे रिया चक्रवर्ती या लेटेस्ट देखा जाए अर्नब की मैसेजेस को दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, तो वो कैसे हुआ है, that's a totally different topic of discussion. But since they are encrypted, they cannot be revealed by the company itself. तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. They don't want any kind of no third party banner ads. They don't want any third party. They would rather earn their own revenue. They will provide their own kind of ads, and they really want to make sure that you don't get any kind of spams and everything else. So इन चीज़ों को और ये इस इंफॉर्मेशन को प्रिवेसी पॉलिसी में और हमारे एग्रीमेंट में ये भी क्लॉजेस होते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन को ये आगे सेल भी कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं विद थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस. एंड इट्स ऑलवेज लाइक अ टाई अप विद द थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जिसके साथ है. तो आप कहीं ना कहीं जब भी आप वो एग्री बटन दबाते हैं, you kind of sign up to kind of share your information. So to kind of, before I compare it with anybody else, with another product, एक चीज मैं जरूर जो सबको बताना चाहूंगा कि इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं या आप ऐसी कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, आप कहीं पर भी इंफॉर्मेशन आपने अगर पब्लिक डोमेन में दी है, शेयर की है, तो you're pretty much like in the public domain. Your information is easily available, accessible to everybody. स्पेशली जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे गूगल होम लेते हैं या अलेक्सा लेते हैं, तो once you buy these products and you agree to use them, you are exposed. So वो लोग जो बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में इश्यूज बना रहे हैं कि व्हाट्सएप की ये पॉलिसी चेंज हो रही है, तो is gonna expose me. One thing which I have read and I've clarified is, there's very minimal impact to a regular WhatsApp user. तो अगर आपका business account नहीं है, तो आपको उतना impact नहीं पड़ेगा, because you still have been sharing your information till now. Your information has been encrypted, and it will continue to be encrypted in the future as well. But business accounts may, yes, there are integrations that are happening. There are additional informations that will be captured. तो जिनके business accounts हैं, उनको हो सकता है उनकी information थोड़ा ज़्यादा publicly तो नहीं मैं फिर भी बोलूँगा, but it will be easily accessible to Facebook and to WhatsApp, because end of the day, what Facebook wants to do is they want to make it available to to their own company, so that they can provide the relevant ads. End of the day, it's all about the relevant ads. आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था टेस्ला का, तो अगर आपको टेस्ला पसंद है, they will continue to bombard you with those ads. और जिस तरह ये मार्केट रिसर्चर होते हैं,
जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, दे लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि अगर हम आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट, एक ही तरह की एड्स टारगेट करते रहेंगे, there is a possibility. I think if I'm not wrong, there was a 62% chance of you looking at an ad consistently. अगर आप देख रहे हैं for 1 week, you will 62% of the times you will end up buying something, from that particular site. I'm not saying कि वो चाहे कार के लिए हो, there are smaller products as well. कई बार accessories के लिए दिखाना शुरू कर देते हैं, and people get, I've done that. I'm sure you have done that, and many of us are in the same. But क्योंकि इस पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारी कंपैरिजन्स हो रही थी एज कंपेयर टू सिग्नल. फॉर एग्जांपल, सिग्नल के बारे में आज की डेट में ज़्यादा बात हो रही है, एंड आई एम गोना स्पेंड लाइक द नेक्स्ट 2 minutes अराउंड सिग्नल. uh, the biggest difference between Signal app as well as the WhatsApp app. WhatsApp एक बहुत बड़ी कंपनी है, फेसबुक. Everybody knows what Facebook is, how big it is. WhatsApp जब खरीदा भी गया था, I think if I'm not wrong again, it was bought for about 19 to 20 billion dollars. It's not million, it's billion dollars. तो obviously WhatsApp को अगर इतनी बड़ी कंपनी ने खरीदा है, then definitely they want to kind of mint money from that. Versus Signal. Signal एक ऐसी ऐप है which works almost the similar way as any messenger app. चाहे आप WhatsApp का देख लें, चाहे आप Telegram देख लें, चाहे आप Facebook का messenger देख लें, they all have the kind of similar features. They all are encrypted. The only difference is इनके जो encryption protocols हैं वो इन्होंने खुद बनाए हैं. Plus इनकी जो इंफॉर्मेशन है, it not doesn't get kind of, the people behind the Signal app, even they won't be able to access, and they don't have any rights, because that's how they want it to be. They want it to be like open to the public. They want people to use it as much as, it's not a for profit kind of company. What I read about Signal was it's like a non-profit kind of thing, but they really want to do the right thing for everyone. They want to encrypt it. They want to make everything safe and secure for people who are using this Signal app. So, end of the day, they are really doing something for the community. They really are not running behind ads. They're not running behind any kind of big companies. So I think that is one of the reasons why Facebook, Jesse company, has never appreciated or never liked companies like Signal. The people who are behind Signal, they are also running this for kind of a community outreach and community service, and they really might, at this point of time, they definitely are not into that kind of business model. And one thing which I still have to kind of research, and I will definitely do, is that what is their revenue model? How will they sustain this? Because end of the day, if you're building up at such a level, you have to scale. You have to have an infrastructure. You have to have the architecture. You have to have the hardware that can support this. Because yesterday, yeah, actually आज ही मैं पढ़ रहा था, because of the influx of all the traffic, people downloading it, Signal was down for a very long time, which is bound to happen, because I don't think they expected. Or चाहे वो जैक डॉर्सी हो, चाहे वो एलन मस्क हो, if they endorse any kind of application like Signal, people are bound to move there. And all of a sudden, आज मैं भी देख रहा था, I've been on Signal for a while, but I automatically started getting a lot of messages, a lot of my friends who are on Signal. So looks like a lot of people are trying to move because of this risk. ये जो एक risk या threat कहें कि February 8th का था कि you have to accept the policy, and there's a lot of confusion around the policies. But that date has now changed. So the new date is May 15th. So just to kind of summarize, I won't discourage you from downloading or installing Signal या Telegram. दोनों के अपने अपने फायदे हैं. Telegram में you can have again the same one-on-one kind of chatting. Same on Signal, same on WhatsApp. You could also have groups. Groups में ज़रूर फायदा है, because in WhatsApp you can only do it for 6 people at this point of time, versus in Signal or in Telegram you could have like thousands. I think if I'm not wrong, it's about 200K people that you can have in a single group.
So definitely there are benefits of using Signal. And then, like I said, fully encrypted. Even the video calls are encrypted. If you have ever tried a Signal video app, video call, आप जब कॉल करते हैं सिग्नल की ऐप से ऑन अ वीडियो, फर्स्ट द कॉल गेट्स कनेक्टेड, दैट्स हाउ द इट वर्क्स, और उसके बाद आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स, बिकॉज it's not built on that kind of a protocol that versus if you compare it with WhatsApp, that once you turn on, the camera is on and you start the video call itself. So there are definitely benefits of using Signal versus WhatsApp. But for a common man, if you have been using WhatsApp for a very long time already, there is not much of a change for you. It is the same kind of app with a little bit of additional changes, very minor changes. So there is no impact to a common user. If you have a business account, yes, with all the WhatsApp Pay integration and all the different additional fields that they will be capturing for you, and giving you more kind of targeted ads, I think that's going to be the change. But अगर उसमें भी मैं बताऊं, you know if you've been using Google, if you've been using Gmail, if you've been using any of the Gmail Google products, it's the same thing. If you have used YouTube, you would have observed the same thing. तो जैसे Google का एक suite है, वैसे ही Facebook is also kind of competing and trying to become the next Google, or maybe bigger than Google. So you can compare it with that. Okay, अगर आप Google को use करते आए हैं, तो there is nothing different now. Yes, फेसबुक की कुछ पॉलिसीज, कुछ काम करने के तरीके have always been in questions. So yes, if you go by that, then of course I would encourage you guys to move to Signal. But the only issue, not an issue, but the only concern would be, for how long can companies like Signal or Telegram sustain that model without integrating the ad revenue. Because end of the day, everybody has to make money, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, everybody makes that money from the ad revenue. So that's the other thing. But overall, अगर मैं देखा जाए, I am gonna use WhatsApp, I'm gonna use Signal, I'm gonna use Telegram for various purposes. But yes, आज की डेट में, because of the kind of information sharing that is happening, my personal preference would now definitely shift to Signal. But I again leave it all up to you as to how you see it and what you think about, what your options are, what your choices are, because end of the day, it's your security and safety. Um, ये जितने बड़े लोग हैं, जितने जो CEOs who have been endorsing Signal, yes, they see a lot of value at, and they've been endorsing it for a while. And with the last update that came from Facebook, that they're changing it from February to May, I'm sure they're going to do a lot of awareness. I'm very confident they're going to share more information about their policies, and get more into the details. But at the same time, they really want to just compete with Google, and they want to be the next Google. So on that, I mean, that's where I would love to leave you guys on. If you guys still feel you have questions, please इस video के comments में लिखना. I will do another one for you if there are any additional questions, and we'll continue to share details, information around such more important topics. At this point of time, the good news is there is no तलवार कोई लटक नहीं रही आपके ऊपर, February 8th की, that you have to accept the privacy policy by February 8th, or otherwise your WhatsApp will be disabled. ऐसा कुछ नहीं है. It is till May 11th now. So read more, research more, and if you still have questions, please leave it in the comments, and I'll definitely take it up. All right, guys. On that note, I'll see you guys very soon. Take care, and